अगर स्किन डल हो गई है तो विटामिन सी सीरम बेचारा अकेले क्या ही कर लेगा। आपको चाहिए एक स्किन केयर रूटीन जो आपके डल स्किन, जो आपकी स्किन में कोई ग्लो नहीं है, स्किन बुझी बुझी सी लगती है, उसे एड्रेस करे। सो आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू अ सुपर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, I have dull skin, I have no glow on my skin, what do I do? Well my love, you watch this video क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी सुबह और रात का स्किन केयर रूटीन if you have dull skin, skin that is two toned and basically you feel your skin has no glow. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant, and today's video is dedicated to how can you treat dull skin, two-toned skin, how can you make your skin glow and be glass-like. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस हफ्ते में 4 बार, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे। I think that's my routine. Monday, Wednesday, Friday and Sunday. Skincare Simplified is the only channel on the internet जहां आपको मिलते हैं detailed skincare routines, which is that I just don't review products alone. Products को लगा के दिखाती हूँ, routine बना के दिखाती हूँ, product कब लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, all of those details. So if you're interested, go ahead, hit the subscribe button. Now let's get started. I have washed my face. Now let's get started with the morning routine. अब morning routine में एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि there are two major things जिसकी वजह से आपका skin dull लगता है, and that is the oil level on your face. अगर चेहरा excessively oily है तो भी डल लगेगा, अगर चेहरा excessively dry है तो भी डल लगेगा. So you need to balance out your oil levels. Number 2, you need to choose the product you're going to use in your morning skincare routine. अब morning skincare routine में आपके पास 2 ऑप्शन हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, विटामिन सी या नायासिनामाइड। कौन क्या यूज करेगा अभी मैं बताती हूँ। अगर तो आप विटामिन सी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपको सूट कर रहा है, कंटिन्यू यूजिंग इट। हाउएवर अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, ऑयली और सेंसिटिव है, या नॉर्मल टू ड्राई है लेकिन सेंसिटिव है, यानी इन तीनों ही केसेस में आपको विटामिन सी सूट नहीं करता, आप यूज करेंगे नायासिनामाइड। अगर आप अपने चेहरे पे कुछ भी बेटर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, मिनिमम 10% नायासिनामाइड कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्जिमा प्रोन है, किसी चीज को लगाने से फ्लेयर अप कर जाती है, ओनली देन यू विल यूज नायासिनामाइड 5%। और अगर आप यूज करना चाहते हैं दोनों प्रोडक्ट्स, नायासिनामाइड एंड विटामिन सी, rather than layering up them together, I will recommend this product to you. This is by the Derma Co. This is a product which is called the Niacinamide Radiance Serum. इसमें 10% vitamin C है, 5% niacinamide है. This is also really good. I have used it for about 10 days, not even 2 weeks, but it is nice. Like it's a nice texture, breakouts नहीं होते, कुछ नहीं होता. It's like a watery gel formula. You can use this product as well. ये बिल्कुल greasy नहीं है, lightweight है. It will get into your skin in minutes. So the first thing you need to do in the morning is choose the product you're going to use. Oily, sensitive type skin है, niacinamide. आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई, बेसिकली नॉर्मल है, सेंसिटिव नहीं है, यू कैन यूज विटामिन सी। विटामिन सी के रिकमेंडेशंस पे डायरेक्ट मैंने एक वीडियो बनाई है, नायासिनामाइड पे भी वीडियोस हैं। आई एम गोना लिंक इट ऑल अप हियर, ऑल्सो आई विल पुट द details in the description box. So step number 1 in your morning skincare routine has to be your antioxidant. You will use one of the 2 options. उसके बाद जो second product लगेगा, we'll come to that, but let me do my morning routine with you. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ये Derma Co का Niacinamide, and मैंने ये 1 pump में एक छोटा सा ड्रॉप आया, so I have taken another pump and I have basically got this serum. अब क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी गोज ऑन ड्राई स्किन, सो मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल भी मिस नहीं किया है विद एनी प्रोडक्ट, but of course you can apply a toner if you want to. It is completely optional. So you're going to use this product on your face. Now this is the first product you will use. इसके बाद जो product आप use करेंगे is something that you will get easily in pharmacies, and that is your Azelaic, which is Azelaic Acid 10%. If you're in the United States, if you're in the UK and you can't get this, you can always opt for the ordinary Azelaic Acid suspension. But for all of you who are in India, Pakistan, UAE, बहुत आसानी से, बहुत affordable है, pharmacies में you get this product, you can opt for Azelaic. Now Azelaic, you will take a pea-size amount, कुछ इस तरह से। ये आप लगाएंगे, आपको लगेगा ये थोड़ा ग्रेनी है, but that's how Azelaic Acid is. And then
you will just massage it onto your skin. जो product बच गया है, I will just take it behind my neck. This is a bit grainy when you apply it, but then that is why it's a suspension form. इस पे लिखा है cream, but this is also a suspension. And that's it. इसके बाद अगर आपकी skin oily है, you will apply directly your sunscreen. If your skin is dry, apply a moisturizer, then apply your sunscreen. For a good moisturizer for the dry skin is the Maruala oil, one by Minimalist, and I'm just going to take a very little amount because filhal my dry skin is not that dry. Optional products, you can use your eye cream, you can use your eye serum, you can use whatever you want to. But these two products in your morning routine are critical. आपका antioxidant or azelaic acid. Azelaic acid works at multiple levels. This will brighten your skin, this will help with acne, हल्की फुल्की hyperpigmentation के साथ भी help करता है. और ये morning routine 100% safe है if you're pregnant or you're nursing. So this is something that you will do. However, when you get started with this morning routine, मेरा recommendation रहेगा कि सातों दिन आप azelaic acid सुबह ना लगाएं initially start by using it 2 to 3 times a week और जैसे जैसे आपकी skin की tolerance बन जाए and you can tolerate azelaic acid, then you can start using it every single day. हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी sensitivity हो, थोड़ी सी irritation हो. That is why I recommend starting slow with azelaic acid. Having said that, azelaic acid 10% बहुत gentle है, it suits most people. And अगर आपकी skin over a period of time tolerance build करती है, you can switch to azelaic acid 20% as well. But in my opinion, 10% for all of this two-tone skin dullness is ideal. So this is the first thing that you will do every single day in the morning, or you will use your azelaic acid a few times a week. This will help brighten your skin. आपने अपने skin को दिया है एक antioxidant और आपने अपने skin को दिया है एक active जो आपकी skin को brighten करता है. Now let's move on to the PM routine. रात का routine is going to be very simple with only 3 products. Actually 2 products but 3. Number 1, 2 to 3 times a week अगर आप beginner हैं, आप लगाएंगे एक retinol based serum और उसके साथ आप लगाएंगे अपना niacinamide serum. Now remember, अगर आप वो Derma का niacinamide ले रहे हैं, the C-cinnamide जिसमें vitamin C है और niacinamide है, that I don't recommend using with your retinol. आपको irritation हो सकती है, which is why I do recommend आप एक normal 10% niacinamide लेके रखें, because niacinamide is that one ingredient that can go with pretty much every other skincare ingredient. In fact, I made a video on that, which is one ingredient 15 routines or one ingredient 10 skincare routines. You can check it out later. It is all about how you can layer niacinamide with different ingredients. Coming to your PM skincare routine, 2 products, niacinamide and your retinol. Now the way we're going to layer this is, let me show you. मैंने face वापस wash कर लिया था. So because I don't want to get a burn. So you're going to use your niacinamide first. 2 drops लिए हैं मैंने. This is the Sunday Riley Niacinamide Serum. Okay. Just wait for it to get completely absorbed into your skin. Then, pea-size amount of your retinol. ये भी Sunday Riley का है. मैं अपने regular routine में tretinoin लगाती हूँ, which is medical grade. But if you are just doing this for two-tone skin, if you are younger, if the goal is not massive anti-aging, if you're not in your late 30s, 40s or whatever, then you can definitely opt for a retinol-based cream or a serum. That's it. इसके बाद आप लगाएंगे अपनी face cream. The Minimalist Maruala oil is good and that completes your PM routine. This is something you will do शुरुआत में हफ्ते में 1 से 2 बार, then 3 to 4 times a week. हफ्ते की बाकी की 2 रातों पे this is what you will use. You will use either one cream, which is glycol cream. ये आपको मिल जाती है pharmacy से बहुत आसानी से. You will use glycol 6. That is what you will use. और उसके ऊपर आप लगाएंगे अपनी face cream. If you are for some reason not getting the glycol cream, you can use the Pixie Glow Tonic, you can use the Ren AHA Glow Tonic, you can basically use any AHA based
टोनर एंड इसके ऊपर आप लगाएंगे अपना नायासिनामाइड सेरम. सो ट्वाइस अ वीक यू आर गोना एक्सफोलिएट एंड बाकी के हफ्ते के 4 रातों पे आप लगाएंगे अपना रेटिनॉल and that is going to give your skin a chance to replenish itself. So जो retinol है, it will boost your skin cell turnover, so your skin's going to look brighter and firmer. जो glycolic acid है, whether it's in a toner form or a cream form, that is going to gently exfoliate your skin, so your skin, your dead skin is going to get removed and you're going to get your fresh new baby skin. And जो सुबह का routine हमने किया है, that is going to overall brighten your skin. 3 key ingredients हैं. Retinol, glycolic acid, azelaic acid. Niacinamide is actually the best friend. वो एक चीज़ है जो हर चीज़ के साथ लगती है. I don't even consider it like a separate, corrective ingredient. It is more of a complementary ingredient जो आपके पास होना चाहिए. But other than that, this is a 3 ingredient skincare routine. Let me warn you. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, you are new to my channel. Please don't go ahead, buy everything together and एक साथ लगाना शुरू कर दें. You will have a reaction. एक्टिव्स या किसी भी तरह के केमिकल एक्सफोलिएंट रेटिनॉल को इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका ये है दैट यू इंट्रोड्यूस 1 इंग्रेडिएंट वंस एवरी 2 to 3 वीक्स. जैसे कि नायासिनामाइड आपने आज तक कभी नहीं लगाया, फर्स्ट स्टार्ट यूजिंग नायासिनामाइड इन द AM, नेक्स्ट वीक यूज इट इन द PM, थर्ड वीक इंट्रोड्यूस योर एज़ेलिक एसिड. उसके बाद 6th वीक यानी 2 हफ्ते का और 2-3 हफ्ते का ब्रेक देके आप इंट्रोड्यूस करें ग्लाइकॉल क्रीम को. उसका भी आपका टाइम निकल गया 2-3 हफ्ते. Then introduce your retinol. Be very, very slow and steady with your skincare because skincare is a marathon, it is not a sprint. But this routine, which will also be in the description below, will definitely help your dullness and two-toned skin problem. Video pasand aaye, do consider liking the video and subscribing to my channel. I will see you next time. Till then, take great care of yourself. Bye.